Hello and welcome back on Pitchside. Like I say, domination from Pakistan on day one. They won the toss. They decided to bat first, and it was always important to put runs on the board. And at the end of the day's play, I think they would be a happy side indeed. With me, I've got a very, very special guest who sort of set the platform at the top for Pakistan, Imam ul Haq, and I've also been joined by Waqar Yunus. Imam, thank you so much for joining us. बहुत ज़बरदस्त कमबैक होम सीरीज़ पे पाकिस्तान का आपकी तरफ की आप थोड़ा सा ये बताएं अपनी प्रेपरेशन के बारे में। जब आप आ रहे थे, कमबैक जब भी होता है तो एक नर्वस एनर्जी ज़रूर होती है, आपको वो हुई या क्या थॉट्स थी आते हुए? अरे देखिए, बिल्कुल ऑब्वियसली जब आपका कमबैक होता है 1.5 साल बाद टेस्ट क्रिकेट में, तो ऑब्वियसली आपको नर्व्स तो होते हैं जितने मर्जी आप एक्सपीरियंस हो, बट मेरे ख्याल से वो आपको किसी न किसी तरह वो आपके नर्व्स आपको निकालने पड़ते हैं, क्योंकि आपको प्रोसेस याद रहना चाहिए। तो मेरी हमेशा फर्म बिलीव रहा है कि मैं क्योंकि अच्छी क्रिकेट खेलता हुआ आ रहा था, काफ़ी पिछले 2 महीने से फॉर्म में था, तो वो मैं अपने आप को बार बार वो ये चीज़ दिला रहा था याद के, क्योंकि मेरा यॉर्कशायर से काउंटी सीज़न बहुत अच्छा गया था, फिर हनीफ मोहम्मद ट्रॉफी बहुत अच्छी गई थी, तो मेरे जहन में वही था और मुझे पता था कि हम बेटर प्रिपेयर हूँ मैं, और मैंने जितनी भी इनिंग्स खेली और वो मोरन लेस इस तरह की विकेट्स में थी जो कराची में भी थी, तो उसने भी काफ़ी हेल्प किया हनीफ मोहम्मद ट्रॉफी के जो मैचेस थे। और हमारा यहाँ पे पिछले ऑल दो कैंप में मैं नहीं था, लेकिन 1 महीने से हमारा वो कैंप लगा हुआ था इन्हीं सॉर्ट ऑफ विकेट्स पे। तो ये चीज़ें होती हैं एज अ प्रोफेशनल प्लेयर, आपका कम बैक इन एंड आउट आप होते हो, लेकिन द थिंग इज़ द इम्पॉर्टेंट इज़ कि आप इन चीज़ों को ज़्यादा मत सोचो। आती हैं जहन में, डाउट्स आते हैं, बट द थिंग इज़ अगर आपने निकलना है तो मेरे ख्याल से आप वो क्लियर जो है वॉच द बॉल एंड देन जस्ट ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स वाली चीज़ होती है। अच्छा, एक और चीज़ इन्होंने काउंटी का मेंशन किया, एंड आई एम गोइंग टू आल्सो आस्क यू दैट क्वेश्चन बिकॉज यू हैव गॉट प्लेंटी ऑफ काउंटी एक्सपीरियंस वकार भाई। उससे कितना आपको हेल्प हुआ? लिस्ट ए में आपने खेली, तकरीबन 700 रन्स भी किए, वो प्रिपरेशन कितनी इंपॉर्टेंट थी? देखिए ज़रा, मुझे ऐसा लगता है कि जब आप अच्छी क्रिकेट खेलते हो ना, कहीं भी खेलते हो, तो आपका ना एज अ पर्सन, एज अ प्लेयर, आपका ना कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर होता है। और मेरा ये मानना है कि जब भी आप इंटरनेशनल में आओ ना, तो टैलेंट से ज़्यादा मेरे ख्याल से आपकी अप्रोच मेंटली और आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत मैटर करता है। तो जी, जो काउंटी वाला सीज़न था वो मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट था मेरे लिए, और उसमें जो रन्स मैंने किए ऑल दो वो वाइट बॉल में थे, बट उस चीज़ ने मुझे जो है बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिया एज अ प्लेयर। और क्योंकि जब आप ओवरसीज़ में किसी भी जगह परफॉर्मेंसेज देते हो, तो एज अ प्लेयर आपका जो एक ग्राफ है ना, वो थोड़ा सा आप रिकॉग्नाइजेशन आपको अच्छी मिलती है, और एज अ प्लेयर मुझे ऐसा लगता है कि मैंने काफ़ी कुछ वहाँ पर सीखा एज अ प्लेयर। मैंने जब मैचेस जितवाए तो जो चीज़ें मुझे अप्रिसिएशन मिली वहाँ से, तो वो मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ। और उसके बाद जब मैं वापस आया तो बिल्कुल डिफरेंट कंडीशंस थी। हनीफ मोहम्मद थी तो हमारी होम कंडीशंस, बट मैं एक दिन आके दोबारा हनीफ मोहम्मद ट्रॉफी में खेला, तो मैंने आते के साथ जो 300 किया उससे भी मुझे काफ़ी बूस्ट अप हुआ। तो जब आप ऐसी परफॉर्मेंसेस बड़ी करते हो ना, तो मुझे ऐसा लगता है एज अ प्लेयर आप में ना वो कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो जिस वजह से फिर लकी ये था कि फ़ौरन ही हमारी सीरीज़ थी, तो ये भी बहुत लकी होता है कि जब आप फॉर्म में हो तो उसी वक्त कोई सीरीज़ आ जाए, तो उसमें ये होता है कि आपकी काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं कि परफॉर्मेंस देने के। आपने इतनी काउंटी खेली है वकार भाई, बताएं कि किस तरह से आपकी स्किल्स इंप्रूव होती हैं, कॉन्फिडेंस इंप्रूव होता है, क्या सीखते क्या हो आप, या डोमेस्टिक खेलने से, जिस तरह इन्होंने ट्रॉफी का मेंशन किया, ओवरऑल ये जो पीछे प्रिपरेशन होती है ये कितनी ज़रूरी होती है? देखिए, हमारे ज़माने में इस तरह शायद सोचा नहीं जाता था कि जी अच्छा काउंटी क्रिकेट खेलेंगे तो हमें एक्सपीरियंस मिलेगा। आई मीन एक सर्टेन एज पे आपको खुद भी नहीं पता होता कि ये मुझे हेल्प हो रही है या मुझे मिल रही है इस चीज़ से, और इमाम का मेरा हमेशा से ये फर्म बिलीव था कि ही इज़ टू गुड अ प्लेयर टू सिट आउट ऑफ द टीम। एंड मैं समझता हूँ कि इसकी जो मेहनत, ऑफ कोर्स जो फर्स्ट क्लास अभी जो मेंशन इमाम ने की, फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलना और फिर काउंटी क्रिकेट खेलना, काउंटी क्रिकेट आई मीन डिटर्मिनेशन दिखाती है। इसका सबसे जो बड़ी प्लस मुझे जो दिखा है वो ये है कि इसकी डिटर्मिनेशन है, बिकॉज जब ये टीम से बाहर हुए तो ही वाज हर्ट, और जब आप हर्ट होते हो तो उसके 2 तरीके होते हैं, या तो आप बिल्कुल जान छोड़ देते हो कि यार मुझे नहीं खेलनी है क्रिकेट, और या फिर आपका होता है कि ओके आई एम गोना प्रूव पीपल दैट आई एम स्टिल गुड इनफ टू बी पार्ट ऑफ द इंटरनेशनल साइड। सो आई फील कि इसको ये बहुत हेल्प मिली, और ये हसन अली को भी मिली थी। मुझे आई रिमेंबर 2-3 साल पहले ही वाज स्ट्रगलिंग, ही वेंट बैक इनटू द फर्स्ट क्लास क्रिकेट। आई थिंक फर्स्ट क्लास क्रिकेट जितनी 4 डे क्रिकेट आप खेलेंगे, ज़्यादा खेलेंगे, ऑफ कोर्स आपका एक तो तजुर्बा ज़्यादा होता है, और आप फिर ऑफ कोर्स जब इस लेवल पे आके खेलते हैं तो फिर इस तरह के रिजल्ट आते हैं। नॉट ओनली कि जी आप प्लेयर अच्छे तो होते ही हो आप, लेकिन आप ग्रूम हो जाते हो और आपको समझ आ जाती है कि रन्स किए कैसे जाते हैं। ये दिस इज़ नॉट कि जो सिर्फ टैलेंट है, दिस इज़ ऑल्सो स्किल टू लर्न हाउ टू स्कोर रन्स। एंड आई थिंक
Imam ke, I happened to work with him a little bit also, knowing him also, and I think he's a fantastic individual also and a fantastic player. जो अच्छे player होते हैं उनको ज़्यादा देर आप टीम से बाहर नहीं रख सकते। अच्छा ये बताएं कि पार्टनरशिप लगी ज़रूरी था, एक अर्ली विकेट पाकिस्तान की गिर गई, तो क्या आपस में कप्तान थे, क्या कम्युनिकेशन थी कि कैसे चीज़ों को लेके चलना है, इन कंडीशंस को कैसे अप्रोच करना है? देखिए, जब पहले ओवर में अब्दुल्ला आउट हो गया था तो शानी से हम दोनों की बहुत ही बेसिक हमारी थी कि हमने इतना ज़्यादा उस बारे में सोचना नहीं कि जस्ट वॉच द बॉल, और जो हमें पता था कि हम दोनों स्ट्रोक प्लेयर हैं और हमारे लिए लकी ये था कि हमें आते के साथ ना स्टार्ट अच्छा मिल गया डिस्पाइट लूजिंग अब्दुल्ला। अगर आप देखें हमारा 8 ओवर्स में ऑलमोस्ट 48 रन्स थे, तो वो स्टार्ट हमारे लिए बहुत अच्छा हो गया कि जब हम 8 ओवर्स में 50 थे ना, तो एज अ बैटिंग यूनिट आपको एक बहुत अच्छा एक अच्छा कंफर्टेबल प्लेटफॉर्म मिल गया कि यार जिसमें आपको ना रन्स के बारे में सोचना नहीं पड़ रहा था। तो हमारी ये बात हुई कि यार हमारे रन्स नहीं रुक रहे, तो हमने बस बेसिक्स पे रहना है, हमने आउट खुद नहीं होना। हमारी कोशिश ये थी कि हमने उनको कोई चांस मत दें, अगर उनका अच्छा बॉल है फेयर इनफ, बट हमारी वो पार्टनरशिप से मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी चीज़ें हमारे लिए बेहतर हो गई, क्योंकि 160 पार्टनरशिप जब आपकी लग जाए, उसमें सबसे अच्छी मुझे लगी कि हमारे ना स्ट्राइक रोटेशन बहुत अच्छी थी, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। एज अ पाकिस्तानी बैट्समैन ये कम सुनने को मिलता है, बट ये था कि हमारी स्ट्राइक रोटेशन बहुत अच्छी थी, तो जिस वजह से मेरे ख्याल से वो पार्टनरशिप की अगर मैं कहूँ ना कि जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो स्ट्राइक रोटेशन थी। इमाम, सवाल ये है कि कोई ऐसा वक्त दिन में था जब when you and Shan were batting के things were tough, पिच को अगर मैं तो पिच पे गया था, तो मैंने जब पिच देखी तो मुझे एकदम एक डर सा लगता है, नॉट ओनली कि घास से ही आपको डर लगता है, बट आप कई दफ़ा पिच में क्रैक्स देखते हैं, ड्राइनेस देखते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं स्पिनर से भी आप खौफजदा होते हैं। इट्स नॉट ओनली गेटिंग हिट, ऑल्सो गेटिंग आउट ऑल्सो। सो कोई ऐसा वक्त दिन में या जब आप बैटिंग कर रहे थे कि यार ये थिंग्स आर गेटिंग टफर नाउ? विकी भाई, जब हम लंच के बाद जब आए ना, तो वो एक आधा, अगर आप उसमें भी अगर आप देखें ना, 13 ओवरों में उन्होंने मेरे ख्याल से सिर्फ 22 रन दिए हैं, जो वो वाला था, क्योंकि थोड़ा सा ना बॉल सॉफ्ट हुआ था, और उसकी वजह से ना हम दोनों के सिंगल लंच के बाद ना आना बंद हो गए थे। उस वजह से हमें थोड़ा सा टफ हुआ था, और उस वजह से हमने थोड़ा सा, मुझे ऐसा लगा कि हमने वहाँ पे काफ़ी बात करने की कोशिश की कि यार अब हमने आउट नहीं होना। उसमें अगर आप देखें तो 2-3 चांस, मेरा भी एक कैच छूटा था, शान का भी एक चांस जो है वो उधर से निकला था, तो वो एक जो मेरे ख्याल से एक ऐसी चीज़ थी कि जहाँ पे वो 1 घंटा था, वो मेरे ख्याल से सबसे टफ था, लेकिन जो है कि उसमें इतना ज़्यादा कोई हमारे 3 से 4 आउट नहीं हुए। जब हम, मेरे ख्याल से जब चीज़ें आसान हुई तो हमारे वो टी से पहले मैं और सऊद जो ऊपर आउट हुए, तो वो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, उस वक्त मुझे लगा कि यार टर्निंग पॉइंट हो सकता है, क्योंकि वो 200 पे हम 4 आउट हो गए। लेकिन मेरे ख्याल से रिजवान और आगा को जो है काफ़ी अप्रिशिएट करना चाहिए, उन्होंने जो है स्ट्राइक रोटेट भी किया है, रन्स भी लगाए बोर्ड पे। मेरे ख्याल से जब किसी भी टीम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, अगर रन्स लग जाते हैं ना, तो वो फिर अगर आप 350 या 300 पे एंड पे दिन में ख़त्म होता है, तो आपकी 5 विकेटें हाथ में, तो आपको ऐसा लगता है कि यार हाँ, गुड डे फॉर द बैटर्स। अच्छा, you spoke about strike rotation and that's been a concern for Pakistan across all formats. थोड़ा सा एक इशू रहा है। आप कॉन्शियसली इस पे काम करते हैं, माइंडफुली काम करते हैं? You spoke about the fact that we were actively trying to take singles and doubles. देखिए ज़ैनब, मुझे ऐसा लगता है कि स्ट्राइक रोटेशन तभी आएगी जब आप मैचेस खेलोगे। तो मुझे ऐसा लगता है, मैं बार बार वही बात करूंगा कि वी हैव टू प्ले, हमें हमारे प्लेयर्स को अनफॉर्चुनेटली डोमेस्टिक क्रिकेट खेलनी चाहिए, चाहे वो T20 हो, चाहे वनडे हो, चाहे वो फर्स्ट क्लास हो। मुझे ऐसा लगता है कि जितने आप मैचेस खेलेंगे ना, तो आपको पता चलता रहेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ और मुझे कैसे इंप्रूव। ऐसा नहीं हो सकता आप मैचेस खेल रहे हो और आप इंप्रूव ना करें, डिस्पाइट इफ़ यू आर स्कोरिंग रन्स और नॉट। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जो किया, मैं पिछले साल विकी भाई के साथ भी बहुत वनडे भी खेला हूँ, T20 भी खेला हूँ, मैंने पिछले साल फर्स्ट क्लास भी खेली। तो ऑटोमेटिकली जब आप पूरा सीजन खेलते हो ना, तो उसमें आप कहीं ना कहीं स्टेप बाय स्टेप, ऑब्वियसली पाकिस्तानी बैट्समैन की प्रॉब्लम थी कि हम स्ट्राइक रोटेट इतना अच्छा नहीं करते, तो मेरे माइंड में भी ये है। तो जब हम ये वाली चीज़ सोच के हम डोमेस्टिक खेलते हैं, तो उसका मुझे ज़रूर फ़ायदा हुआ था। तो मैंने जो पिछले साल सारी डोमेस्टिक खेली है, उसमें मेरा ये प्लान था कि जब स्पिनर्स आएँ, स्पेशली जब स्पिनर्स आते हैं मिडिल ओवर्स में, तो हमारे वनडे क्रिकेट में, इवन T20 में भी और टेस्ट क्रिकेट में भी, कि हम बिल्कुल एक थोड़े से बॉक डाउन हो जाते हैं। तो उस पर हमने कोशिश की, मैंने पर्सनली इंडिविजुअली, कि जो है कि हम 6 के 6 बॉल डॉट्स ना खेल दें, चाहे वो टेस्ट क्रिकेट ही क्यों ना हो। हम फीट यूज़ करें, हम रिवर्स स्वीप मारें, कि किसी ना किसी तरह वे आउट निकालें टू गेट टू दी अदर एंड, ताकि जो है बॉलर पे प्रेशर है। तो मेरे ख्याल से काफ़ी हेल्प आउट हुई मुझे उस चीज़ की। चलें, ठीक है इमाम, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। ऑब्वियसली डोमिनेट किया है पाकिस्तान ने, डे 1 एंड में बैटर्स ने कंट्रीब्यूट किया है, सुबह भी जो है हमने देखा टॉप ऑर्डर ने भी कंट्रीब्यूट किया है। सो वी विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग। थैंक यू, वेल डन, थैंक यू विकी भाई, वेल प्लेड।
All right, then that was Imamul Haq for you, the man of the moment for today, really sort of putting together all those runs at the top when Pakistan lost that early wicket. We'll take a short break, and when we do come back, we'll be joined by Sean Pollock. Back on pitch side, Pakistan closing the day on 313 for 5. I've been now joined by Sean Pollock. Polly, overall a day that belonged to Pakistan, but there were moments in the game. There was a period when we were looking forward to a hat-trick, and it seemed like South Africa pulled things back. What do you think? Where do you think they sort of lost the day today? Yeah, I thought they were good initially. I mean, obviously wicket in the first over set the tone nasty from KG, and then just before and in and around that tea break, they picked up those 3 wickets with the score on 199 for 5. You felt like South Africa were back in the game, and that big partnership between the two at the top of the order for Pakistan obviously put paid to a fast start. I think a few missed opportunities have got to be mentioned. I mean, a couple of catches that went down, which enabled the partnership to be that little bit bigger. Naid Rizwan to still be at the crease now. I think that's where South Africa lost it. I think also maybe short of a gallop. You know, you saw the guys who'd been on the county circuit. Verreynne, energy, wonderful to the end. Simon Harmer, he's been playing county cricket, energy to the end. The other guys who haven't been playing the longer format for a period of time, maybe they were found wanting a little bit the heat, the 90 overs in the field. So I think they'll be a little bit disappointed about the way it ended, because at 199 for 5, you can think you take a wicket, you get Rizwan out, the next man comes to crease, you maybe end with Pakistan 260 for 7. Could have been the day. So they'll be a little bit disappointed by that. We don't know how the surface is actually playing, because I think Pakistan have batted well. I think they've done a really good job of negotiating the spin for South Africa. We'll really get an understanding once South Africa to walk to the crease and they have to deal with the local spinners as to what they can do. So I still think Pakistan firmly in control from what they've produced, just the 5 wickets down, so plenty of runs can still be compiled. South Africa maybe just ruining a few missed opportunities and maybe a little bit of energy at the back end. Waqar, we spoke about Imamul Haq, but let's not forget the contribution of somebody like Shan Masood at the top. You know, there's been a lot of concern with his own form in Test cricket, but it was good to see that he scored some runs and really got going at the top. Yeah, losing wicket in the first over and then, you know, you're a skipper and you're under pressure. You have to come and steady the ship, and I thought he did it beautifully. Not only that he managed to, you know, stay out there, but he scored quickly also. So I thought his inning was very, very crucial. Of course, the partnership with Imam was very, very pivotal at that stage. A big partnership at that stage. So I thought, you know, Shan Masood definitely grown with confidence, especially playing spinners on a track which is offering spin. A little bit of inexperience in the bowlers, but he played all around the ground, as you can see in the wagon wheel, that he's a 360 kind of a batter once he gets going, and I think he enjoyed his batting today. So overall, apart from a small hiccup which just Paulie mentioned, where Pakistan lost 3 wickets on 199, apart from that, I thought Pakistan controlled the day quite nicely. Not only they just batted through the day, but also kept the run rate up there near 3.5. So I thought the wonderful cricket played by Pakistan. I can't work Shan Masood out, because he came to South Africa. I was really impressed by what I've seen. He comes here in this innings and plays superbly under the pressure of losing that early wicket. How does he average 30 in Test cricket? I mean, you guys have seen the whole entire journey, but it doesn't make sense to me. He's a much better player than averaging 30. Yeah, it's because either he'll get big score or he'll get nothing. That's the problem. So he doesn't get those middle 40s, 50s or 70s. He doesn't get those. So he'll get big scores, and then he'll have a bad patch due to his technique or I don't know. But he does have that issue that when he goes, you know, out of form, he goes out of form for a long period. When he's cold, he's cold. When he's hot, he's hot. Yeah, that's true. Well, I'll tell you who was hot for Pakistan today. It was Mohammad Rizwan, Polly, because he came in at that crucial time. You know, the tipping point that we're talking about earlier on. How crucial was his innings? Yeah, I've always admired the energy he brings. Whenever you watch him, whenever South Africa play Pakistan and you see his performances, he's up for the fight. He's ready to get stuck in. He's always looking to be positive rather than defensive. And I thought that's what he brought to the equation. You know, they were in a pickle there. We mentioned 199 for 5. And in that partnership, he was the one who was initially the aggressor. He was the one who got the momentum back in Pakistan's favour. And I thought he played some wonderful shots. He mixed up his aggression with good defence.
and really was a thorn in the side, particularly against the spin of the South Africans. He moved around the crease, made it difficult for them, and his sweep shots are so effective and makes it difficult for him to bowl, or to be bowled at. And he was also well supported on the other end by Salman Ali Agha, who seems to really enjoy this particular format. You know, he's done really well in tests and supported Rizwan really well on the other end. Yeah, a very good player of spin. You know, I've seen it in Sri Lanka, also seen it against the West Indies. He batted really, really well. And a crucial number 6 or 7, he bats and bowls a little bit, of course. But his batting has come up extraordinarily well. You know, he sweeps really well. That paddle sweep he plays with such a control. And then when he needs to, you know, sort of inject a little bit, he comes out of the crease and plays those big shots also. Another player who's a busy player like Rizwan wants to just carry on with those, you know, strike rotation, and also in between looks to hit big shots. So that partnership also really put Pakistan in a serious driving seat right now. I mean, losing 5 wickets now, and coming back tomorrow, and if Pakistan get another 100 on the board, if they can. Stop it. They'll be, yeah? Stop it. No, you don't want me to say? No, I don't want you to say. I'll leave that here. Who's won the predictions game today, by the way? I mean, Big time. No, you only one ahead. I fought back. I fought back at the end with a couple of the referrals. I gave it. You're to him, jet lagged. You're jet lagged. It's Yeah, okay. badly jet lagged. We're giving you the brownie points in any case. Just in terms of South Africa's spinners, then, you know, it was always going to be a challenge adjusting in these conditions. What did you make of that spin department overall from South Africa? Yeah, I thought they came back nicely. I mean, I think if you look at the wickets that South Africa took, most of them were down to the surface and the actual good deliveries rather than Pakistan throwing it away. I mean, initially that's a quality delivery. The third delivery of the match, if you get that, there's not much you can do. So that was good review as well from South Africa. There was 2 good reviews from Aiden Markham. That was a real plus for him today. This is a good delivery because a lot of them had turned and beaten the outside edge. That all went on straight. So not much you can do as a batter. So those are quality deliveries. That's a good take. There was other opportunities created in and amongst that. And I thought in general the control was pretty good. This was the moment where South Africa thought, wow, we're back in the game. And then Simon Harmer got rid of Babar Azam. So those weren't reckless shots from Pakistan, so it's got to be good deliveries from the South African bowlers. So the 5 wickets that have fallen, they created the other opportunities, 3, maybe 4 other drop catches that were thrown in and around that. But you can expect them at the start of a series maybe to not be as sharp and be on point all the time. But I think in general they'll be happy with a lot of the spinners' performance. Obviously, we talked about the lack of experience coming in and the loss of Maharaj and what a big blow that is. But I thought the other guys stood up well. Polly spoke about the lost opportunities, and dropping catches is something that you don't normally associate with the South African team, not a characteristic of them. So those moments are always going to be crucial in any format. Look, when you grew up on a pitches which are, you know, high bounce pitches, and you catch him somewhere around your waist and your your thigh, it is difficult. When the ball's dying at you, the ball's sort of keeping low, it is difficult. And when you're not used to those sort of catches, they gave it a good try. But these catches in Test match cricket to a player like Rizwan or Agha, you give them the opportunity, they'll grab it, and they'll grab it with both hands. And yeah, I mean. They could have scored those catches, and Pakistan could have been in trouble with the bowlers coming after this wicket, with Hassan, Shaheen and the rest coming. So it could have been a different story, but not the case. This happens in cricket. It is always interesting, though, when the conditions change, Polly. It gets difficult for teams to adjust. We've seen Asian teams struggle in South Africa with catches because the catches come at a different height. How important is that a factor? Yeah, I mean, a lot goes into the build-up. The coaches and everyone will do the research into knowing what is going to be the right catching height that the ball's going to come through at, and making sure that if you do get that opportunity. I think the key is that when you play in these kind of conditions, you don't always get that many opportunities. So when they do come along, you can't afford to miss out on the chance of taking those catches and putting the opposition under pressure. So I think that's where they feel like they've let themselves down. I mean, there's no doubt the hours are spent in catching and whatever it may be. But they're being out there in the hot sun, the concentration levels, not having done that kind of thing for a while. But you do need a little bit more time, I think, to prepare. They only came for last 3-4 days, and straight away getting into on a surface where they're not used to, of not only batting or bowling, but also fielding, where the field positions and how far do you have to stand on certain pitches. So I think
it's the time. If this would have been maybe 10 days before the test match, or maybe even a week before the test match, things might have been different. But, you know, not 2 or 3 days are not enough, I feel. Yeah, I mean, it's the modern way, isn't it? Yeah. I mean, they say they had a camp back home in South Africa, which they did do. But is that enough preparation? Is that enough to get an understanding, as you say, on the little intricacies of the game? You can work on the batting and bowling, but field settings and what positions and where people need to stay down, it is a challenge. And, I mean, in our day, we would love 1 or 2 games before the first test happens. How many runs do you think Pakistan needs to put on board now, just in terms of... No more. No. You think that's enough? We know, but we don't want you to get any more. we wanted to fall, what is it now, 313. We wanted 313 for 6, for 7, and then for 8. Like it was with 199. You know, same thing, please. Just 100 from Mohammad Rizwan and 100 from Salman Ali Agha. They'll do. I think 2 sessions. I think it's about sessions. If you bat 2 sessions, I think Pakistan will have, you know, big chance of winning the test match, because this pitch is not going to get better. It's going to get harder and harder. And if you're not used to playing these conditions, and also to the bowlers like Sajid and Numan, who are very experienced and have their tail up, you know, they just against West Indies and against England, they were just too good for them. So I feel that if Pakistan manages to get 2 more sessions in, with even 80 runs a session or 90 runs a session, I think they'll be happy with that. I think the key for me is you've got this partnership, which is obviously established already. So South Africa have to use that new ball tomorrow in order to make inroads. They have to break that partnership. If they don't, it's big trouble for them. And then also the ability of Rizwan in particular to bat with the tail. So if he loses Salman Ali Agha early on, and he's still there with the 4 bowlers that are still to come, then it's still a problem for South Africa, because he's one of those guys who can harbour the strike, can be a positive, can defend and really create problems and linger that innings on. So South Africa have got such an important half an hour, 45 minutes when they come to the crease tomorrow. All right, then. It was great to You recovered from your coffee in there? I have. Thank you for saving me. That's teamwork. That's teamwork. Now it's his turn to hit the bed now. Yeah, exactly. I think he's kind of dozing off. That's why he's taken a dig at me on air as well. But thank you so much, gentlemen, for your thoughts. That you heard it from Waqar Younis and Sean Pollock. We've got day 2 lined up for you. Don't forget all the action tomorrow. Don't forget that as well. But yeah, we're talking about that. And of course, we've got promo as well lined up for you for day 2. We will be hearing from the supporters just shortly, because there's been a huge crowd in here at Gaddafi Stadium. It's great to see them turn out in huge numbers. हम सुबह जो है 8 बजे घर से नाश्ता करके आ गए थे और ठीक 10 बजे हम यहाँ पर पहुँच गए थे। मैं मेरे दोस्त हम सुबह से यहाँ पर आए हुए हैं। शुरू में तो हमें लग रहा था कि टर्निंग ट्रैक होगा काफ़ी ज़्यादा। अब्दुल्ला शफीक इन स्विंगर पे बहुत अच्छी तरह उसने कोशिश की खेलने की, मगर वो आउट हो गया था। हमें लगा था कि 1 साइडेड मैच होगा, यहाँ बॉलिंग जो है बहुत अच्छी, बॉलिंग साइड बहुत डोमिनेट करेगी, मगर शान मसूद और इमामुल हक ने बहुत अच्छे से आके विकेट को स्टॉप किया और मैच को बहुत अच्छे तरीके से आगे ले गए। बेसिकली हम तो बाबर आजम की देखने आए थे परफॉर्मेंस, मगर वो भी कुछ खास नहीं थी। जितना हमने अपना टाइम निकाला संडे का, छुट्टी का दिन, हमें बॉलिंग से बहुत ज़्यादा तवक्को आता है। नुमान अली अच्छे स्पिनर है और शहनशाह अफरीदी से बहुत ज़्यादा तवक्को आता है। इंशाल्लाह अच्छा कमबैक करेगा पाकिस्तान और अच्छी बॉलिंग करेगा इंशाल्लाह। कल इंशाल्लाह पाकिस्तान 350 से ऊपर करेगा और हमारे कटप्पा साहब मुझे लगता है कि कल कमाल करेंगे, और शाहीन अफरीदी से भी हमें अच्छी एक्सपेक्टेशंस हैं कि अच्छी बॉलिंग करेंगे। Well, great to see them come out in huge numbers at Gaddafi Stadium, Lahore. It was great to see them here, and we can hope that the crowd stays consistent over the next few days. Let's have a look at what we've got for you tomorrow lined up. Overall, we started early today, and we will be joining you once again. The coverage starts at 9:30 a.m. for this Vigotel Mobile Presents Bank Al-Falah Test Series. Well, thank you once again, gentlemen. Waqar Younis and Sean Pollock. Pollock, I think you need your sleep now. That's what you know. He's being very sort of professional about it. All right, then. Day 2 is what we have for you lined up. Plenty of action on that side, but that's pretty much all that we have for you from here. Until then, it's goodbye.